Hey everyone, Namaskar. CS Harshadan Gaikwad here from HGPA classes Pune. Well, this video is specifically for CMA Inter students appearing for December 24 examinations. Now please go through this video in entirety. पूरा वीडियो देखो, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है ये. नंबर वन, जिनका भी December 24 में अभी अटेम्प्ट है, जिसका भी एग्जाम्स है अभी, तो सबसे पहले अभी आपका कोचिंग चल रहा रहेगा. You might be revising, you might be studying a lot because obviously exams are coming near. 10th of December 24 को exams scheduled है. Now, some of you might be giving group 1, some of you might be giving group 2, or few of you might be giving both the groups. Now, in this video, in the entire video, we have come up with the revision series. It's completely free of cost. Remember, I did not use the word marathon, okay? Now, what has happened is, in our complete fraternity, the word marathon has become so famous. Then what happens is whenever marathons are coming, whenever they are live, वो कभी-कभी एक दिन में complete किए जाते हैं. The only point is what marathons are very good. The point is the ones who have already completed their studies, उनको ही वो फायदा होने वाला है. Second point, बहुत ही fast होता है वो. Marathons ऐसा होता है कि it's only a mental satisfaction for the coaching academy. हाँ, we have taken the marathons. But the main point at HGPA is that you should be very much clear with your understanding. That is why we are coming up with the CMA Inter both groups revision series. Now hear me out very properly. In this video, I'm going to tell you the dates. मैं आपको इसमें dates बताने वाला हूँ, so that even you can pre-plan all your schedule properly. Okay? Now we're starting with group 2 first, and at the end we'll wrap up with group 1. Now जितने भी मेरे subjects हैं, we'll be coming up with 2 to 3 videos on this. Kapil sir, Nitin sir will also guide you for their respective subjects. Now the subjects which I take, FM, OPM, Audit, SM, Law, इसके dates please सुनो. Group 2 के पहले dates हैं. सबसे पहले October 23rd. First we start up with the financial management. So financial management का date 23, 24, 25 and 26. So पहले financial management खत्म करेंगे अपन starting from 23 to 26. Also 11 AM will be the timing. Sharp 11 AM YouTube HGPL live will start streaming. Okay. The moment we finish up with FM, उसके बाद सबसे most important subject and the most avoided subject, and that is audit. Audit हम शुरू करेंगे 29, 30 और 31 को. We have given ample of time so that वो marathon नहीं हो रहा है. It's a proper revision. I'll repeat myself again. FM will start from 23rd and on 26. Audit will start from 29 and on 31st. After that, Diwali is there. So a couple of days even you can take a break. And after that, when we come back in the first week of November, OPM शुरू होगा, Operation Management, 6th, 7th, 8th और 9th of November. These are the dates for your OPM. After OPM, we'll go down to SM. SM एक दिन का होगा आपका, 10th को है और Sunday है उस दिन, ठीक है? So पूरा दिन अपन SM करेंगे with the question answers. And after that, I'll start with Group 1 और Law का subject रहेगा. And Law will start from 12th, 13th, 14th and 15th. These are the dates for your Law. ओके, सो इसमें जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो मैंने पूरे कवर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका ऑडिट, ओपीएम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लॉ. सी रिमेंबर वन थिंग, जस्ट जॉट डाउन द डेट्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये डेट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पे अटेंशन, इट इज नॉट जस्ट अ क्विक मैराथन्स. ओके, द रीजन व्हाई वी हैव बाइफोकेटेड दीज डेज इज बिकॉज एक आराम से करेंगे, वील ट्राई टू कवर द एंटायर करिकुलम व्हिच इज देयर. अगर आपको ग्रुप 2 में बहुत दिक्कत आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेल यू व्हाट हैपेंस इज ऑडिट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो आप ऑडिट आपका कॉन्क्रीट करेंगे, विल डू ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आल्सो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा. ओके, बट आपको एक छोटा सा काम करना है. इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस, ऑब्वियसली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. द ओनली थिंग इज व्हाट, अगर आपको नोट्स चाहिए, इवन नोट्स आर फ्री. द ओनली थिंग इज यू नीड टू कंप्लीटली फिल अप अ फॉर्म which you will find out in the description box. Okay, so CMA Inter students, I'll see you on the 23rd of October. Make sure you obviously share this video on all your friends. And December 24 examinations, अगर आपको exemption के साथ निकालना है both the groups, you know what to do. Enroll for this revision series. It's free of cost. Fill up that form and then we will meet you. Okay, I'll meet you on the 23rd of October. Thank you.